hard fought on both sides. न्यू प्लेस न्यू मिशन। तो हम आ चुके हैं यूरोविंस्कायर पे। एक मिनट इनको निपटा लूँ मैं। तो आपका स्वागत है दोस्तों वल्हाला के नए एपिसोड पे। तो यूरोविंस्कायर पे हम आ चुके हैं। तो हमें यहाँ पे समन किया गया है हाल्फडैन की तरफ से, जो कि बहुत बड़े कॉन्करर हैं यहाँ के नॉर्थ के, और ही इज़ ऑल्सो हाफ ब्रदर ऑफ ईवार एंड उबा। हमें समन किया गया है, हम यहाँ पे आए तो हमें यहाँ पे कुछ वॉर की। और ये चेतक क्या कर रहा है यार? हाँ ठीक है, जाना कहाँ है वैसे? तो यहाँ पे कुछ वॉर हुई है, यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। चलते हैं वॉर की तरफ। यहाँ पे लाशें ही लाशें आप देख सकते हो। बहुत ही खतरनाक माहौल है यहाँ पे। आते ही हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ से बात करते हैं इससे। Well met, Eivor Ravenfen. Now there's a face I've seen before. HALFDAN Jarl. He summoned me. Is he near? He was, but the Picts hit us hard. We were separated. Fresh attack from the hills. Watch your backs! Picts. They won't be happy to see the likes of me. वेल तो पिक्ट्स ने हमें अटैक कर दिया वापस से, और ये बहुत तीर चला रहे हैं यहाँ पे। तो हमें समन करने वाले हाल्फडैन फ़िलहाल यहाँ थे, चले गए बट, और हम इनके तीर वापस इनको ही फेंक रहे हैं। अभी मारते हैं इनको जल्दी जल्दी। तो दूर बहुत है। कम ऑन डाई। अभी नहीं मरा यार ये। चलो एक गया। काफ़ी तीर वीर चल रही है यार बैकग्राउंड से भी। कहाँ से आ रही तीर? तो हमें फ़िलहाल यहाँ बस प्रोटेक्ट करना है इनको। यहाँ पे कुछ आ गए हैं। चलो इनका काम करते हैं जल्दी से। काफ़ी आबादी लेके आए हैं। ये तो नहीं है बंदा जो अपनी साइड का है। एक तो भाई समझ में ही नहीं आ रहा कौन कौन है। कहाँ भाई, कहाँ पट्टा भाज रहा? इधर देख ले। आधा तो समझ में ही नहीं आ रहा। खैर अब यहाँ आ चुके थे, यहाँ सभी इनके मेंबर्स हैं। ये मारते हैं इनको। भाई आग वाग लगा रहे हैं ये लोग अलग। इनकी अलग टैक्टिक चल रही है भाई साहब। अरे एबिलिटी यूज़ करो यार, जल्दी इनको मारो वरना ये दिक्कत दे देंगे। इसको तो ऐसे मारूंगा ना। चल ये फिर से आग वाग फेंकने लगे। ये इनका अलग कुछ चल रहा है भाई। कहाँ से तेल वेल लाए हो भैया? तुम कहाँ छुप रहे हो? इधर आओ। चलो ये सब मर गए हैं, कुछ और बचे हैं गिने चुने। ठीक है, मैं मारता किसको एरो हूँ और कटता कौन है? खैर एक और बचा है। चलो ये ले छुरी। अरे हो जा डाउन भैया। मान ही नहीं रहा है ये तो। थ्रो करेंगे इस पे। ले। अरे यार कितने सारे हैं यार ये पिक्ट्स के लोग, तो ख़त्म ही नहीं हो रहे यार। अरे हो जा भैया हो जा। बहुत लाइफ खा गए, मेरे को भागना पड़ेगा थोड़ा सा। काफ़ी लाइफ ख़त्म कर दी इन्होंने। अब एक तो क्या काम हो भी रहा है तो उतनी दूर कौन जा रहा है मारने? ले भाई तू भी ले थोड़ा बहुत। उन्हें भैया यहाँ पे। तो चलो भाई पिक्ट्स के मेंबर को अभी के लिए तो हमने यहाँ पे चटका दी। बात करते हैं फराविड से। फराविड से हम पहले भी मिल चुके हैं जॉर्विक में। और यहाँ पे हमें कुछ और मेंबर्स देखने को मिले हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए पूरी तरह से।
ओह, हाल्फडान की एंट्री। भैया थॉर वाली एंट्री मार गया भाई। HALFDAN Regnason, we meet in the Forge of Battle. Surely a good sign. I don't know you. One of Faroid's new dogs? I am Eivor of the Raven clan. Eivor, yes. Down in Mercia. Kingmaker with my brothers Ivar and Ubba and Finir in East Anglia. From the tales I hear, I feared you might be taller. That's not a fear you feel often, I imagine. So you answered my summons. But the timing is poor, as you can see. Too many here are spent, battle-sore, thirsty. Faroid, have your men build field pyres for the dead. At once, my Jarl. Not here, not now. Then to Doncaster for a victory feast! The oldest son of Ragnar Lothbrok, so he says. What do you make of him? What I think doesn't matter. I'm interested in what his men think of him. Is he honest, trustworthy, loyal? Is that why you've come here? To earn Halfdan's trust? To find a seat at his table? I have my own table. What I want is a bond of friendship between the new lords of England. Among whom you count yourself, I suppose? It is an ally I seek, not a master. Well, there is but one lord of Northumbria. You heard the Jarl. Take the gear and start digging. तो डेफिनेटली हाल्फडान हमसे कुछ बात करना चाहता है, बट अकेले में बात करना चाहता है। कुछ तो उसको प्रॉब्लम खा रही है जो हम शायद सॉल्व कर सकते हैं। और ये छलांग बहुत बच गई। स्लाइटली इधर उधर होते तो यूवर की खोपड़ी हाथ में होती, बट खैर। तो चलिए जाके मिलते हैं। तो हाल्फडान के अड्डे पे हम आ चुके हैं। ये रहा उसका महल, फोर्ट्रेस जो भी है। यहाँ पहुँच चुके हैं। हम बात करेंगे, जानेंगे क्या समस्या इसको खा रही है और हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। Where would Halfdan Jarl hold court? तो ये रहा उनका अड्डा, यहाँ पे रहते हैं ये लोग। बहुत बड़ा साम्राज्य है इनका यहाँ पे। यहाँ से सब चलता है। चलो भैया चलते हैं ऊपर, मिलके बात करते हैं हाल्फडान से, क्या प्रॉब्लम सता रही है इसको। ओहो, देसी लिफ्ट यहाँ है। अरे और भैया कहाँ कूद रहे हो, यहाँ नहीं जाना है। अच्छे से काम करो। क्या हो रहा है यार, ये जस्ट डू इट। किधर बैठा होगा ये बंदा? चलो उधर साइड में ही बैठा है। Crush them in spring. No sooner. That is the plan. Yet my people suffer day by day. Your people. This war must end. That is my first concern. The time to strike Is when I say we strike. Halfdan's hammer protects this land. Tell my people that. King Rishia. As you wish, my lord. Halfdan Regnason, my sword arm answers your call. Thank you for your tribute, Eivor Wolf-Kissed. Your battles and deeds are well known to me. And you are the hero of Jorvik. So sing my skalds. Not just any hero. Eivor brought order to the city when King Rishie could not. They say you rooted out a gang of thieves and traitors. Not alone, but I led the charge. You gifted my silver to the carls and churls of Jorvik. To men and women who needed it most. A foolish choice. The coin never left King Rishie's treasury. I try never to regret the decisions I make in a time of war. Agreed. To second-guess ourselves would only stall the victory. I don't regret sending Faroid to lead our strike against the Picts, in spite of Eivor winning the day. Eivor and I held them Halfdan Jarl, so you could sweep in, stab a few cold corpses, and claim a glorious victory.
Old friend. Your jests hit like Odin's spear, always on the mark. I would not be here without your hammer, Great Jarl. Please accept this, your share of the loot we won today. A thing of beauty. Frankish, I believe. What do you think, Eivor? A fine piece of work, fit for the lips of a king. Or a man who makes kings. There's wisdom in this one, Faravid. By your leave, Lord, I must return to my forward camp. It's a long, cold ride. My lord, in your summons you said... Not here, not now. Dance, sing, and fill yourself with ale, and meet me atop this tower of stone. There I will weave a tale of friendship and treachery. A tale as old as the world. तो हाफ डन हमसे तभी बात करेगा जब प्राइवेट मिलेगा हमें अलग कहीं पे। तो फ़िलहाल उसमें मिशन अपडेट ये है कि आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हो। नाच ही लेते हैं यार, आओ यार ईवोर भैया, चलो दिखाओ नाच। अरे हट जाता हो यार, अकेले नाचेंगे अपन, अपने को कैमरा चाहिए सामने। अरे फिर से मुंह पे आ गए सब लोग यार, खतरू लोग हैं यार। मेरे को कैमरा नहीं दिख रहा यार, ये मज़ा नहीं आ रहा मुझको, नहीं कर रहा डांस में, छोड़ो। चलो हम आ चुके हैं हाफ डन के कमरे पे और यहाँ पे हमसे बात कर लेगा वो शायद। All this. We conquered this, he and I. Together. You've earned great fame, won many battles across England. I'm not alone. No. Bjorn Ironside, fearless Uber, Ivar the Boneless, Sigurd Snake and I. Great warriors all. My brothers. Gold is good and battle better, but glory never dies. Forever it lives in the Hall of Heroes, high. Together we have conquered. One sword is not an army, Eivor. Even a hero needs loyal friends. I have never lost sight of that. Never. Have you room for one more among those you call friend? What does friendship mean to you, Eivor? Friendship goes beyond words. It is a solemn bond, a chain unbroken. Spoken like the Volar. You wriggle like an eel in a basket, Halfdan. What has caught you? Friendship can also spoil, like rotten meat. After all these years, he dares to bite my hand. Faravid. He seems a good and loyal man. Seems, yes. As a bright sky in winter seems warm. But rumors fly of little men plotting treason in the dark. Have you proof of his treachery? Not yet. That is where you enter my saga. Prove this for me. Discover if Faravid has been disloyal. Then we shall talk of oaths. Start me somewhere. Give me something to go on. You see this? From a sea unicorn. I filter my mead and wine with it. I've heard of such beasts. They swim below the ice, beyond the world's edge. And their horns protect against poison. You believe Faravid wants to poison you? I fear he has tried countless times and failed them all. You don't believe me, but I know the man. His gifts of wine, his easy smile, his envy, his plots. Learn the truth. Dig up, unearth his treason. Why trust me with such a task? Jorvik, you stopped the ill deeds of Audun and his swarm of rats. You
do the same here. Like a good sword, honor has two edges. I'll help you. Faravid has left the feast already, heading for his camp. And if I find nothing, if he's a good and loyal man, Even better. Even better. fair enough. I will find what I find. Don't let Faravid fool you. He is hiding something. फराविद और हाल्फडन के बीच में काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो हम आई होप वी सॉल्व इट। बात करते हैं फराविद से। Cold and dirty. Must be the place. Throw yourself in. Faravid! Ah, Eivor, my friend. Is Doncaster hospitality to your liking? I would be careful calling this one friend, Faravid. The crow who comes flapping when HALFDAN gives a whistle. Halfdan and I spoke, and what of it? This is our fight, our chance for glory. Fly on home, crow. Lend me a knife, Faravid. This whelp needs scalding. Ofer, piss off. Small men always talk big. So, was HALFDAN generous? Did you get what you came for? If I help with your fight against the Picts, Halfdan will consider me a friend. So point the way, Faravid. The Picts raided that monastery. Plundered its silver and gold. The Saxons built more churches and barns and filled them with herds of monks. Yes, monasteries make tempting targets. And not just for us. We tracked Pictish raiders heading north. Gold is fine, but victories are treasure. What's your plan? To open their bellies with my knife. I'm ready to fight. Let's put them in the ground. HALFDAN didn't send you north to fight a skirmish we could win with half our numbers. Why are you here, Eivor? In truth, he doubts your loyalty. Fears your heart is not in this fight. Doubts my loyalty? I have fought for HALFDAN, killed for HALFDAN, bled for HALFDAN, and he doubts me? Nothing I have seen gives me reason to doubt you. But Halfdan, he seems a cautious man. Cautious. He was a... To arms, dogs! Let's roast some Picts! Watch for ambushes. Should have stayed in Doncaster. More mead, fewer Picts. There's no glory in guard duty. Move out! The Picts are just ahead. Lead the way and we'll watch your back. Well, let's hunt some Picts. तो कहाँ छुपे हैं ये रहे, दो तीन तो यहाँ दिख रहे हैं। निकालते हैं बो एरो फिर। ये ले बेटा, चल। एक तो गया। अरे तो पत्थर के पीछे छुप गया। सब छुप रहे हैं, कोई बात नहीं, हम जाके ही मारते हैं उनको। ले बेटा, चला जाओ। बस फराविद को एस्कॉर्ट करना सही जगह तक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये भी एक है, ले ले। ये चलो हो गया काम। These Picts are a sneaky lot, masters of guile and ambush. Have a care. ऑलराइट, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ रहे हैं और होने वाले हैं आगे कुछ और मिलेंगे, देखा जाएगा। ये रहा एक, यहाँ एक कुछ और है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा लॉन्ग बो इस्तेमाल कर लेते हैं यार। ये एक गया, ये दूसरा गया, इसको भी दे ही देते हैं दर्द। ये दर्द बस थोड़ा सा, अरे बस हो गया काम इनका। ये गए, चलो लॉन्ग बो का तो अलग ही मज़ा आता है, अल्टर बो इस्तेमाल करने का मज़ा अलग है। बच गया। ये कौन है भाई? ये कौन है जो दिख नहीं रहा हमें? ओहो, पास ही में थे आप तो चाचा। कहाँ जा रहे हो अकेले? ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे? आ रहे हो नीचे, आ रहे हो कि हम ऊपर आए बेटा? क्या चाहते हो?
मेरी वो वेस्ट कर दी इसने, इसको जा, अरे पहले ही ख़त्म कर दिया तुम। चाचा क्या बैठे हो आप यहाँ पे? तो लगता है इसी डायरेक्शन में हमें जाना है आगे। देखते हैं आगे, और कोहरा बहुत है यहाँ पे। और ये मिले हमें एक चाचा और, मस्त। हम आ चुके हैं ये गुफा के पास तक। हमने सक्सेसफुली इन्हें यार एस्कॉर्ट तो कर दिया यहाँ तक। आगे एक और बंदा दिखा है, उसको भी निपटाएंगे पहले। शायद गुफा में जाना है हमें। पहले आराम से स्टेल्थी अप्रोच। मस्त। देख लिए बेटा, चल सो जाओ, अब देख ही लिए तो। ऑलराइट, बात करते हैं फाराविड से, आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। Lord, we made it. This cave is a passage. The pigs are using it to cross the mountain. A gift for us. You track them through the... ऑलराइट, प्लान अपडेटेड। तो हमारा प्लान आज का भी यही है कि इस केव के थ्रू हमें पिक्स को फॉलो करना है। अब जहाँ तक जा रहा है केव, वहाँ तक पहुँचना है, देखना है कहाँ लीड करती है गुफाएं वगैरह वगैरह। लेट्स गो देन। यहाँ नहीं चढ़ सकते हम, कोई बात नहीं, कूदना ही पड़ेगा। ओहो, काफ़ी अच्छी आवाज़ आई मैं कूदते ही। चलो निकलते हैं आगे। ओह वाह, कहाँ आ गए हम? ये पेड़ पे जाना है शायद। चलो नीचे चलते हैं यार। यहाँ पे क्या है ये? ओ ओपल, तो ओपल मिला हमें एक यहाँ पे, अच्छी बात है। यहाँ से जा सकते हैं शायद आगे। हाँ चलो, रास्ता है, मिल गया। देखते हैं कहाँ लीड करेगा। शायद हमें लास्ट में कोई बहुत सारा टीम मिल जाए पिक्स की, मारने पीटने के लिए है, कुछ भी हो सकता है। ये कौन सी जगह है भैया? यहाँ कौन रहता है यहाँ? इधर देख लेते हैं कुछ काम की चीज़। चोरी करते हैं चीज़ें। नोट्स वोट्स पड़ी हैं। यहाँ कुछ है तो नहीं? नहीं, चलो। Reading good and godly places should be home filling my belly, not mucking about on the wrong side of the wall. ऑलराइट, यहाँ पे कुछ लोग थे, एक को दबोच लिया है। बातें हो रही थी यहाँ पे बहुत तेज, और इनको जला जलू के हम यहाँ से निकल रहे हैं चुपचाप। लूट करेंगे, लूट किए बिना थोड़ी जाएंगे। और आगे भी कोई मिल सकता है। This winter, with help from an unknown quarter. बहुत गहरी गुफाएं होती जा रही हैं यार ये तो। The pigs spoke of Stenwaya, their camp. That's to the north. Their chief may be there. Stop them before they reach Stenwaya. They spotted us. Run forward. वेल, यहाँ पे कुछ स्काउट्स बच गए थे जो हमें स्काउट कर रहे थे, उनको निपटाना है यहाँ से। बहुत तेज भाग रहे हैं भाई ये तो। हो रहा है, उसको मारा मैंने, एक भाग गया। और भैया रगड़ दिया उसको तो। एक और भाग रहा है। बस बस एक शॉट और बस। अरे यार, आउट ऑफ माय एरोज। बहुत दूर निकल गया लड़का यार। बुलाना पड़ेगा चेतक को, ऐसे डेस्परेट टाइम्स पे तो बुलाना ही पड़ेगा भैया। और हो गया काम भैया। अरे तुम कहाँ लगे हो चाचा, छोड़ दो उसको। Raiders south of the wall. Don't like it. That's the last one. Let us regroup at Stenwaya. We need to plan our next move. रीग्रुप करना है फराविड के साथ, और यहाँ फराविड पता नहीं क्या कर रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे जब ये रुक जाएगा, तो मैं मिलता हूँ, बताता हूँ क्या हुआ है।
ऑलराइट, तो हमें यहाँ पे पिक्ट्स का लीडर जो है उसे मारना, एग्जीक्यूट करना है। Why would the Picts make war in winter? They must have a reason. Something to gain. चलो भैया, एरोज ले लेते हैं यहाँ से, बल्क में उठाते हैं, देख तो लेंगे ही हमें। लॉन्ग बो निकालते हैं अपनी। Well now. ये गया एक, और ये दोनों सतर्क हो चुके हैं। वापस से पुराने बो पे जाता हूँ। अब समय आ चुका है फेस टू फेस एकदम लड़ाई करने का। चलो भैया, इसको ऐसे एसिनेट करते हैं पहले। नहीं मुन्ना, नहीं, ऐसा नहीं करते। Now to hunt down the Pict chief. चलो, एरोज मिल चुकी हैं, आगे बढ़ते हैं। Stretch your wings, Sunan. बहुत अंदर को जाना होगा, जहाँ तक यहाँ तो नहीं मिलेगा इतना जल्दी। लो भैया लो, कौन इसको मार रहा है इतनी तेजी से? हट जाता हो भाई, हट जा। यहाँ पे हमको इससे कोई की मिली है, देखते हैं कहाँ यूज़ आता है। अरे सब चीता यहाँ पे, एक से एक भागते हैं मार मार के, सब चीता है। अंदर की ओर बढ़ते हुए, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। ऐसे थोड़ी, चल भाई मर जा। अरे नहीं यार, वुल्फ नहीं चाहिए था। अरे यार, ये अलग बीच बीच में दिमाग खाएगा, इसको पहले मारो। ये अलग यार, कोई सोड लेके, आग वाली लेके आ गया कोई, इसको पहले मारेंगे हम, पहले वुल्फ को निपटाएंगे भाई, पहले फुर्सत में इसको मार। चलो ये हो गया, इसके पैर में निशाना। अरे यार, मैं मारता किसको हूँ, जाता किसको है यार, क्या हो रहा है? ये अलग बलिदान के लिए आ जाते हैं बीच में। इसको तो मारना है भैया, ये तो बहुत दिक्कत देगा अपने को। यहाँ पे हमने बॉम्ब भी फेंक दिया है समय पे, ब्लॉक करते या बॉम्ब फेंक सकते हो, नई स्किल है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, बच्चे हो अभी तुम, सो जाओ। सब पे चाकू छुरी मेरी चल रही है बकायदा। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट गाइस। काफ़ी तादाद है भैया, काफ़ी ज़्यादा तादाद है। थक गए हम तो भाई, मार मार के इनको, जाना रहेंगे। चलो स्टॉर्म, स्टॉर्म से पहले ही जान निकल गई भाई, कहर देख रहे हो भाई का तुम। इनको भी निपटाते हैं, एक एक शॉट के हैं ये दोनों। कहाँ धूल झोंक रहे हैं आंखों में यार, किसके हैं? वेल, इस डोर की चाबी तो हमें पहले मिल चुकी थी, तो यहाँ पे पिक्ट्स का चीफ जो है आगे हो सकता है। काफ़ी यहाँ पे काफ़ी लोग तैनात एकदम। तो बी श्योर रेजिस्टेंस काफ़ी होगा, ध्यान रखिएगा। मेरे बेटा रुक जा, सीधे बढ़ रहा है डोर की ओर। कोई मतलब नहीं लोगों से पहले भिड़ने का, वैसे भी भारी तादाद में ये लोग। और यहाँ पे एज यूजुअल डोर बंद ही है, चाबी ढूंढनी होगी। Have a look, Sunan. साइन इन, कुछ बताओ यार, कहाँ है माल? यहाँ पे नीचे भी कुछ लोग हैं। काफ़ी यार, 2-3 आ गए हैं, इनको निपटाते हैं पहले। क्या कर रहा है भाई ये कुछ सुपर ह्यूमंस वाली है, कुछ है, कुछ एबिलिटीज़ के साथ ही, पता नहीं कौन है। इनको थोड़ा सा और मुश्किल होगा बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है हो जाएगा। भाई कौन सी पॉइजनस गैस छोड़ रहा, पता नहीं।
एंड इट्स डन। बस थोड़ा सा और हो गया। हाँ तो भाई एक चाबी और मिल चुकी है। लेट्स गो टू दैट गॉड डैम डोर। उससे पहले यहाँ पे एक दो बंदे और मानते नहीं ना, क्या करें। There you go। ये हुई बात। कमिंग बैक टू द डोर, हम जाने वाले हैं जहाँ। अरे यार मैंने स्टन अटैक का छोड़ दिया ना। इट्स ओके, हो गया देखते हैं इसको। काफी डैमेज भाई साहब लगातार। हमारे बस की नहीं। क्या कर रहा भाई ये? बड़ा बदमाश है यार। बस खत्म हो गए भैया। You're on the wrong side of the giant's wall, friend. Have you come to make war in winter? Fool! He might have talked! We got what we came for. Is that more Frankish wine? I'll take a few casks. And that silver there. Ulfr, that's Halfdan's share. Eivor, just in time to divide the spoils. Take some meat if you like. The pigs are at Magnus. This map spells it out. Ah, the wolf-kissed is a reader. That stark Seder I'll never mess with. Worry about the pigs later. Now's the time for treasure and spoils. You earned it. It should be ours. We did the work. All of it. And nothing for Halfdan, warming his cock in a Saxon castle. Open that cask and we'll have a taste. We'll celebrate together. Sorry, friend, but that's Halfdan's take. You understand. He won't notice one missing cask. So unless there's something wrong with it, let's have a taste. There's nothing wrong with it, friend. If you insist, we'll all drink some stinking wine. A little sour, but not bad. I've always preferred ale myself, or spiced mead. What I won't drink is one of Moira's herbal brews. She claims they're a tonic, but there's no telling what she hides in those drinks. Moira. Who is she? She's a herbalist from the north, always skulking in the shadows of Halfdan's throne. It's a big throne. Don't you all skulk around it from time to time? I see. Because Halfdan thinks I'm disloyal, now you don't trust me. Has our battle bond earned me no favors with you, Eivor? Doubt is too strong a word. But there is a feeling of mistrust among you. I want this alliance to be ironclad. Then let me change your mind. I've got a plan to win this war for good, before the winter sets in. Magnus is a strong fort, but we'll be attacking from the south. With speed, we'll catch them off guard. With Halfdan's blessing, I'd fight beside you anywhere. Name the time and place. No, Halfdan is done fighting for the winter. He thinks it too great a risk, but I say we can win this war before the next snow. If we tell him of this plan, he'll refuse, but if we succeed, you and I together, he'll sing our praises all the louder. All right, we fight. And I swear by Sif's blade, I'll say nothing to Halfdan. Good, good. Victory is ours. I must return to Doncaster for a time, but I will join you for this battle. Deliver this goblet to my Jarl. He has a fondness for them. And tell him his share of the spoils is coming. When you're ready, find me near Jorvik at a place called the Waltz. Halfdan's share brings up each victory, like his
cock, eh? तो हमने फराविद को फोर्स किया ताकि वो वहाँ के मीट पिए हमारे साथ। तो अगर उसमें पॉइज़न होता तो पता चल जाती बात, बट गेस व्हाट, उसमें पॉइज़न नहीं था और फराविद ऐसा तो नहीं चाह रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। फ़िलहाल बात करते हैं। और उसने मोयरा के बारे में भी हमें थोड़ा सतर्क रहने को कहा है। Drink the rest. Yes, yes. Thank you, Moira. That is all for now. The soothing herbs lift the fog from my mind for a time. How long has she been mixing these for you? You're stalling, Eivor. Tell me what you've learned. What news from the north? The Picts were beaten back. We took their lives and their treasures. Faravid asked me to deliver this. Is he taunting me? Faravid poisons the wine he gifts me. These goblets are a cruel joke. He is mocking me. We did capture some barrels of Frankish black. He said they were for you, but I made him open a cask. We drank together. There was no poison. Speak without guise, Eivor. Does he plot against me or no? Does he keep secrets? Give me something I can use. Now you must choose between treason and madness. Between the serpent's fang and the bite of a rabid wolf. Faravid asked for my silence, but Halfdan expects the truth. If I am not careful, these lies will pile up one upon the next. You have grown awfully silent, wolf-kissed. Faravid has planned an attack on the Picts at Magnis. Without you. That twin-faced, backstabbing glory eater! When? Tell me. I won't know until we meet again, at a place called the Waltz. Good. Go to him. Watch, listen. Unearth his lies. You will find them. If you fear poison, Lord, you must consider everything. Even Moira's brew. Impossible. Moira has been with me for an age. She is no witch. She is kind and... Perhaps you could speak with her and find out for yourself. She stays within Doncaster, not far from here. I should see Moira about this brew she's been feeding Halfdan. वेल हमने फराविद के अटैक के प्लान के बारे में बता दिया है हाल्फडैन से, जो कि पता नहीं सही है कि नहीं है। हमने फराविद की बात बता तो दी है, जो अटैक करना चाहता है वो वहाँ पे। फ़िलहाल हम मोयरा की खोज में हैं कि मोयरा हो सकता है कुछ मिलाती हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो हर्ब्स बनाती है उसके लिए ना। कोई शायद पागल करने वाली जो हर्ब्स हैं वो शायद उससे कुछ इफेक्ट हो रहा हो, उसको दिक्कत हो रही हो शायद। Moira's not here. शी इज़ नॉट हियर। तो हाल्फडन के अकॉर्डिंग जो है पॉइजन कर रहा है फराविद उसको। ऐसा हो भी सकता है, बट शायद मोयरा ही इसके पीछे हो, कुछ कह नहीं सकते। This letter came from USKE. She must have gone there. तो चलो चलते हैं। I should go to USKE, find Moira. तो हम अभी जा रहे हैं मोयरा के घर के पास, वहाँ मिलेगी ये। यहाँ पे तो भाई अलग ही कुछ चल रहा है। मारना चाहते हैं क्या इसको? Need to get on the other side. भाई ये जला वला ना दे, उससे पहले हमें पहुंचना होगा उसके पास। चलो पहुंच गए। Goodness! Moira, we must go. I can't go out there. They'll steal me away and burn me at the stake. All right, I see two ways out of this, but neither is without risk. Do what you must, only hurry. You give a good scream and fall. Then I'll carry you through the mob as if I've done you serious harm. Oh, Lord above, have mercy. Time to be convincing. ऑलराइट, तो इसको उठा के यहाँ से ले जाना होगा हमें सेफ प्लेस तक, वरना इसको जला वला देंगे लोग बाग। 1 मिनट इसको रखते हैं पहले। एक्टिंग ही तो कर रही, उठ सकती है वैसे चाहे तो। खैर
अब इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग ही तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वाला हालांकि हर चीज़ से। पड़े रहो बेटा, ठीक है, उठाएंगे तुमको। चलो खिड़की से निकलते हैं यहाँ से चुपचाप। Are they gone? Thank the light. ऑलराइट, हम थोड़ा ही दूर है, वैसे पहुँच जाएंगे। तो हमें इस पे पूरा शक है कि ये कुछ मिलाती उलाती। हम इससे इंटरोगेट करेंगे अभी, जस्ट इसको रखते हैं यहाँ पे। We'll be safe here. Thank you, Eivor. 1,000 times I thank you. And if I asked you to drink your own brew? I would, gladly. And often... When you said there's no cure for what ails Halfdan, you mean he's touched in the head? I fear so. The same malady bedeviled my mother. The body breaks down and the mind falls apart over time. It's a terrible thing. I need your help, Moira. The brews you mixed for Halfdan, what goes into them? Oh, quite a diverse mixture. Let me see. Lavender, rosemary, meadowsweet, yarrow, soothing herbs, nothing uncommon. I should return to Halfdan. He said he would be at the Temple of Flora. Tread lightly this topic with him, if you would tread it at all. ऑलराइट, टाइम टू मीट हाल्फडैन। हमने बात की मोरा से, हमें कुछ खास पता नहीं लगा। नॉर्मली लग रहा है, अब इसमें तो कुछ नहीं। ऑलराइट, फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं इससे, यहाँ क्या समस्या चल रही सुनते हैं। Halfdan, good to find you here. The raven feeder returns. Now keep quiet. I'm hunting a band of traitors lurking about this swamp. Who told you there were traitors here? My scout. He asked me to join him here, but he is nowhere to be found. Have a look around. Tell me if you see something. Eivor, search the perches and lookouts here. We could be spying from above. Olav? Speak to us! Where are you? हाल्फडैन का स्काउट ओलफ गायब है, उसको ढूंढ रहे हैं। Show me what lies और ahead. मिल चुका है, बहुत गंदी हालत में पड़ा है यहाँ पे। मिल तो चुका है, चलो उठाते हैं इसको। लग रहा है डेथ हो चुकी है भाई साहब की, लगता है। तब ये स्काउट बुलाया था हाल्फडैन को यहाँ पे। Clinging to life. I should carry him down. लो, ये काम बढ़ा दिया। अब हम इसको लेके ऐसी ऐसी जगहों पे कूदेंगे, यही तो जीवन है। खैर कुछ भी कर लो यार, निकलना तो पड़ेगा, नीचे हमें जाना तो पड़ेगा। अरे कहाँ जा रहे हो अकेले? अभी तक तो तुम मरे हुए थे। हैं? वाह भाई, आ गई जान तुम पे, है ना? बस हमारा काम बढ़ाओ तुम। लो भाई, इसको पटकते हैं उसके सामने। ये तो नहीं बचने वाला। I found your scout, but his wounds are grave. Olaf. Poor Olaf. He will be buried with honors. I will see to that. Walk the bridge, old friend. I will see you on the other side. Anton may track his attackers. Get them, boy. तो अब हमें इसका वफादार पेट है, वो बताएगा कहाँ जाना है। इसको फॉलो करना होगा हमें। चलो फॉलो करते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचाता है उसका पेट हमें। बट काफ़ी चीज़ें और पता लगी हमें मोयरा से, जैसे कि अपना हाल्फडैन है जो, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मोयरा की मदर को भी थी, ऐसा उसने कुछ बताया हमें। क्या कर रहे हैं यार ये लोग? कहाँ जाना है बेटा? काम कर लो थोड़ा सा, कि सब हम ही कर लेंगे। Sniff them out, boy. We will paint the ground with their blood. देखते हैं कहाँ लीड करता है ये पेटिस का। Who are these men you suspect of treason? Thieves who stole my war spoils. ट्रेटर्स का पता लगाते हम इस बिल्डिंग तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है देखते हैं, सीढ़ी पे जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे। वेल, इसके नीचे आपको स्मैश करने के लिए मिलेगा ये। Here, a hidden entrance. They might be lurking below. You have done it.
These pipes burst and flooded the tunnel. Even this old Roman work needs that icy kiss. Look there. The pipes cut through that wall. Could there be more rooms beyond? well, तो आगे हम रूम ढूंढ रहे, कोई रूम मिल जाए तो। Something's not right. यहाँ पे तो भाई पॉइजनस गैस वगैरह तो पड़ी रहती है, ऐसी नॉर्मल घूमती है। यहाँ पे रूम्स हैं क्या? मिल गया, चलो फोर्स ओपन करते, देखते क्या मिलता है। The Romans were fine craftsmen. Yet they went mad and vanished, just like their gods. Moira's books tell us so. Ah, here, you see? Spoils of war. Mine! Stolen from me! I am beset on all sides, Eivor. By plotters and schemers. What kings and jarls are not? Your territory is vast and wealthy. Everyday decisions I make change the lives of thousands. It is a burden few could bear. Yet I do. I do. You spoke with Moira. What did you learn? She means well. I don't believe she would poison you. Not willingly. She also said she'd seen your illness before. In her own family, she said it came on slow but was incurable. No. No, this is not an illness. This is poison. Somehow someone is poisoning me. Shh. Listen. These will be the thieves who stole my tribute. तो इस जगह कोई और है व्यक्ति यहाँ पे, थीव्स हो सकते हैं जो लूट के यहाँ पे सारा माल इकट्ठा करते हैं। पहले हम चाबी बटोरते हैं, पीछे जाके वापस आगे आएंगे, खोलते हैं दरवाज़ा इसका। तो हाफ डैन की चुराई हुई चीज़ें ये यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। देखते हैं कौन है ट्रेटर, पता चलेगा आगे। Wolf-kissed and HALFDAN, well met. Come, fill your bellies with mead. You stole this tribute. By rights, this is mine. It was meant for me. We stole nothing. Faravid gifted this to us for a hard day's battle. And did you take my scout Olav in that battle? Your brother in arms? Did he too have to die for this tribute? That was Olav? Damned fool. We thought he was a thief. The only thieves here are the ones drinking my mead and spit-shining my silver. You, cowards and traitors. We are owed this bounty, Jarl. For battles won and blood let. Eivor, you tell him. They only took their rightful share. You are traitorous worms. But Eivor seems to think you deserve pity, so I will give it this once. Return my spoils to Doncaster, and I will wipe this day from my memory. I can't do that. It is our share. We fought for it, killed for it, bled for it. If we don't get the glory, we deserve our share. The barking will stop. They forced my hand. Take hold of your fear, Halfdan. It can poison your mind. Faravid killed this man, not me. He forced my hand with sleights and trickery. He... Forgive me, I find it hot in these furs. The day must be warming. You have a meeting with Faravid. Is that not right? I do, at the walls. Yes, I know the place well. It is on the road between Jorvik and Picheringa. Press him, Eivor. As hard as you can. Never let up. And bring me proof of his treachery, or otherwise. Traitors, thieves. No right to... It's rightfully mine. Rat. Words are
poison. कभी भी कुछ भी बोलने लगता है। कुछ दिक्कतें चल रही हैं, उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि स्किल पॉइंट्स हमारे पास काफ़ी आ चुके हैं अभी इतने मिशन करने के बाद, तो लेट्स जस्ट यूज़ इट। यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये नई स्किल, ये वाली तो अपने आप भर गई है। रेवन साइड से हम कुछ और चीज़ें उठा रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली हमें मियाज़मा भी मिल चुका है यहाँ पे रेवन साइड से। कुछ और अनलॉक करेंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। 2 और बचे हैं, यहीं पे वेस्ट कर देते हैं, अगली बार काउंटर रोल उठा लेंगे। फराविद से हम मिलने जा रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगेगा उल्फ की कहानी सुन के। बात करते हैं। Welcome. Join me. You made it. Come, have a drink. You're a few horns deep already. There were other things on his mind. Your man Ulfra, for instance. He died protecting the spoils he stole from HALFDAN. Ulfr. Poor Ulfr. I told him to mind your tongue, but he wags it like a slobbering dog. Was HALFDAN always so easily riled? No. Riches and glory have shaped him into something new. He's not the same man he used to be. What is this place? I expected an army, ready for warcraft. This was our first camp in Northumbria. I came here with HALFDAN and his brothers, Ubba and Ivar. We besieged Jorvik and put King Alla in the cold ground. Those were good days, now too far gone. What is all this? My share of the treasure we took from those distant days. I buried it here for a rainy day. This bag is heavy with silver. Enough to pay for an army. Come! Race me to Jorvik, Eivor. Remind me of the glories long gone. तो फराविद हमें फोर्स कर रहा है एक हॉर्स रेस के लिए, जो कि बहुत नॉर्मल बट ड्रंकन हॉर्स रेस, समझ रहे हो? मतलब पहले पी लो पेट भर के, उसके बाद जब ड्रंक हो जाओ तब घोड़ा दौड़ाना है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? आई मीन वलहाला का गेम है ना, समझ रहे हो ना? वलहाला चल रहा है। Best not fall off your horse. See you in your... वलहाला में छोटी चीज़ें नहीं होती, आप सबको अब तक पता चल चुका होगा। तो सारे यहाँ पे तुर्रम बनते हैं, हम भी बनेंगे, हम भी जीतेंगे भाई ड्रंकन हॉर्स रेस। ऐसे कैसे छोड़ेंगे हम? मस्त नशे में दौड़ा घोड़ा उड़ा, इससे अच्छा क्या चाहिए दुनिया में? इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। यही तो चाहिए होता है भाई गेम में, यही तो शिक्षा प्राप्त हो रही है। हाँ भाई सही है, रोज का है। चलो हम उससे पहले पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा हमें चेतक को कष्ट देना होगा, जो कि सह लेता है चेतक। तो हम ये लो भाई पहुंच गए, बस पहुंच ही गए। उससे पहले Having trouble keeping up? My horse must be deeper in the cups than I am. What are we doing in Jorvik? You haven't said. Paying a visit to our kept King Rishi. Long may he reign. I haven't enough men to beat the Picts alone, but with Rishi and his Fyrd, we'll finish them off. You would bring a puppet king into this fight, but not your Jarl. Keep this to yourself. किंग रिक सीज से बात करने जा रहे हैं, फराविद को आर्मी चाहिए। चलिए बात करते हैं। I did not agree to this level of deception. You should have told me this before. Eivor, my friend. Wait. A favor I must ask of you. Make no mention that HALFDAN is ignorant of our plans. It's better this way. Are you mad? Rishi answers to HALFDAN. You put this man in grave danger if he defies his master's will. Rishi cannot defy orders he has never heard, no? Trust me. I will take the blame should our plan fall apart. Eivor the Wolf-Kissed and HALFDAN's cupbearer? What a curious surprise.
I hope the day finds you and Jorvik well. Yes, we scrape by, with what little we still own. But this new war should make us wealthy once again, until our tribute is taken. I smell the bile on your breath, King. Do not forget who is in charge here. Oh, do remind me, Faravid. Yesterday it was Halfdan, but today I hear whispers that you are leading the charge. I am confused. Yes, you answer to Halfdan. And now he orders one final strike on the Pict stronghold at Magnus. To make war with the North on such a scale will require a hefty amount of silver and a large force of men. My soldiers and silver are pledged already. I expect the same from you. I have given my aid as well. The battle must be decisive. I see. And you have these orders from Halfdan in writing, yes? From the great man himself? To be clear, King Rishie, Halfdan knows nothing about this attack. Nothing at all? That's unusual, Faravid. Eivor is mistaken, Lord King. I was given Halfdan's personal assurance that you would volunteer your troops. He expects as much. But Halfdan is ailing and tired. Let us not burden him with more worry, but please him with a swift victory. I'm sorry, Faravid, but duty compels me to refuse. Without strict orders from Halfdan, I will not risk the lives of so many. You deny me! I do. To gift you an army puts my wealth and reputation at risk. That's not what Halfdan wants. He needs a strong and loyal king. You presume to know what Halfdan wants. Without Halfdan's formal approval, I cannot help. It's too great a risk. And after all, he is my ally. You understand? I should break your arms for that. What were you doing? I saw no reason to hide the truth. Rishie is a Saxon puppet. He has more to lose than you and I ever will. That serpent cannot be trusted, Eivor. If he tells Halfdan of our plan, our victory is at risk. Our victory is for Halfdan's own benefit. We will secure Northumbria for him, along with the gratitude of all its Saxon and Norse subjects. Fine. If we falsify orders from Halfdan, Rishie will accept them. Hjor of Jorvik could help. Good. Hjor's favorite alehouse is nearby. Seek him there. तो हमने बात की उससे तो माना नहीं। वो बोल रहा है उसको सारे ऑर्डर्स चाहिए हाल्फडैन से, जो कि हम मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि फराविद ने तो आखिर झूठी बोला है उससे। फराविद खुद ही चाहता है ये करना अकेले। तो हमने सोचा क्यों नहीं एक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए उसके ऑर्डर के साथ और उसे बस दे दिया जाए ताकि हमें आर्मी मिल जाए किंग से। तो यही प्लान करते हुए हम जोर से मिलने आए यहाँ पे, जो कि हमें जोरविक में मिला था पहले। तो वो हमारी ऐसी फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाने में मदद कर देगा। बंदा है कहाँ? तो ये रहा, चलो बात करते हैं। You're just where I hoped you would be. Eivor, gods! You have come at just the right moment. Right then, watch this. Go home or get hurt, but you won't bother my friends. I'll bother who I please after I brick your face to the brains. Guess what? नहीं guess कर लो guess क्या हुआ? शांति से एक दिन बीता ही नहीं है भाई। कुछ काम करने जाओ, कुछ और मजदूरी पकड़ा देंगे, बर्तन मजवा लेंगे, कभी बोलेंगे दो ही बन जा। ये देखो ये कहाँ मार रहा है मुझको। अरे रुक जाता हो यार। चलो एक डाउन हो गया। चलो मतलब यार एक काम करने जाओ है, ये करने जा रहे हैं, उसके बीच में तुम 10 काम दे दो। इतना बदबू मजदूरी करवाते हैं बे लोग। तभी तो कहना खेल रहा हूँ मैं। उसमें अपने को थोड़ी फीलिंग आती है कि हाँ भाई अपन मजदूरी करवा रहे हैं, कर नहीं रहे, कम से कम रोड्स रहते हैं अपने। कमॉन बॉयस बोल दो चल जाते हैं। यहाँ तो ऐसा काम बर्तन वर्तन सब मजवा लेते हैं यार ये लोग। अब तू कब चाचा चौधरी कब मर रहा है तो भाई? अरे बस चला जा भाई, चला जा, हो गया बस, बन गया तो ब्लॉक लेसन। निकल भाई यहाँ से।
ओ पागल है क्या ये? Eivor, always the fighter. Thank you, Wolf-Kissed. With greater sense, I hope. Secret errands for Halfdan. I need an army of men to face the Picts in the north. Has Halfdan planned an attack he cannot afford? That's not like him. To be clear, Faravid made this plan, not Halfdan. Does Halfdan know of this plan, or? He doesn't, but he's given me leave to act as I must, for reasons I cannot share. Yes, we've heard the rumors, and all our messages have gone unanswered. Can you aid me with some trickery? Help me forge a set of orders from Halfdan himself to force Rishia's cooperation. You'll be taking quite a risk. You'll have my thanks. We can meet. Eivor, join me for a drink. तो ज़ोर से बात हो चुकी है हमारी, ज़ोर और जो बोलना है बोल लो। तो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हमें बस मिल जाएंगे उससे, तब तक हमें वेट करना होगा उसका। आप मेडिटेट कर सकते हो या फिर यहाँ बैठ सकते हो कुछ देर टाइम पास के लिए। हमें फोर्ज डॉक्यूमेंट जैसे ही मिलेगा हम वो रिक्सीज के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे बस काम करा दे। Both seem to have settled well in the city. Yes, we do enjoy the comforts we have here. The cold and the warmth. Stay on the road safe, Eivor. I try to. Here, take this forgery and pray that King Rishia sees nothing amiss. I trust you know what you're doing. Straight from Halfdan's hand, as you see. Yes. Well, if Halfdan's loyal mules have pledged to fight, still, my help will come at a price. If you're speaking of coin. I remind you that your soldiers are mine. Halfdan's, my good man. Halfdan's soldiers, for these are Halfdan's orders. Correct? But I jest. I jest. All is in order then. If Halfdan commands, I shall raise my feared, and you shall have your fighting army. Good. Get them marching at once. This must happen soon. Eivor, a moment with you? I'll meet you at Stenway. Faravid is Halfdan's man. So are the Hemmings of Nottinghamshire, as are we here in Jorvik. But not you. I don't like talk that dances around thorns. For whom are you fighting, truly? I fight for myself and my people. As any great leader must. Why ask me of loyalty? An innocuous question. Sweet to the taste, but there are things simmering in Northumbria hidden from even you. Take heed and have a care. Faravid should be waiting at Stenway. फाइनली हम तैयार हैं एक वॉर के लिए। पिक्ट से वॉर होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। मिलने जा रहे हैं हम फराविद से, बट उससे पहले इनको जस्ट फॉर फन मारेंगे। ये सब हम देखने वाले हैं अगले एपिसोड पे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड पे।